Let's just wait a few moments for the persons to arrive. And I hope the problem has been resolved. I hope I'm audible today. Well, Sairam to you all, I do have some news for you today that we are planning to conduct an examination very, very soon, and the course has been decided. And I'll just read it out to you. And of course, उसकी फोटो आपके WhatsApp ग्रुप पर भी आ जाएगी. But let's just discuss a little bit about it first. अगर कुछ रह गया है, अगर किसी चीज़ में डाउट है, तो हम लोग यहीं पर उसे डिस्कस करके सॉर्ट आउट करेंगे. Because यहाँ पर I have checked everything and all I can say is just put your volume on maximum at your home, at your devices. Use headphones. Then you might be able to hear me more clearly because here I cannot be any more louder and whatever the microphone system is working with, you'll have to work with that. My advice will be for those who cannot hear me properly, just re-watch the class on YouTube today. Because that is the system's fault. I cannot do anything much. यहाँ सिर्फ आवाज़ हाईएस्ट है जितनी हो सकती है. Cannot go any higher. See, I think this is because of the network area all of you are in. क्योंकि बारिश हो रही है. Maybe your network is not good because some are saying it's coming clear, some are saying it's not coming clear. It means from my side it is going well, but from your side the reception is not. So my advice will be go to another corner in your house where the signals are maximum, where it is the strongest, so that you might be able to hear. And even if then you are having problems, just rewatch the class on YouTube क्योंकि यहाँ से बेटा आवाज़ क्लियरली जा रही है, आपकी तरफ से रिसीव नहीं हो रही है. It's not your fault, it's not my fault, but we'll have to do something to take care of. साराक्षी अगेन मैं आपको वही बात बोल रही हूँ. आई जस्ट राइट इट डाउन ऑन द चैट बॉक्स. Thank you, Laksh, for your tutorial, but I think that I have taken care of that. Thank you so much. And there are only 15 of you. I'm not understanding why is that an issue. Anybody knows? It's already time. You're already late.
But your examinations are approaching, it's pretty much right over you. Okay. I'll just read out the syllabus that we have decided today. The official syllabus will be sent to your class books respectively. And class 7th will have Geography chapter 1 to 5, History chapter 1 to 4, and SPL chapter 1 to 4. I think we have covered all of these. If there is something left over, just let me know. Chapter 5 Geography, we are currently in process of doing it. Anybody has any issue? Beta, I already wrote what you can do to take care of the voice problem because from my side it is doing well, from your side it is not being received well. I am sorry, but despite all my efforts, I cannot do much to rectify that problem. Yes, Pankti, what's your problem with chapter 4? Ma'am, I don't have any problem from chapter 4, but in chapter 4 SPL, I write question answers, so I can't able to find question number 5. Yes, Pankti, you said something about chapter 4. Is there Ma'am, please keep your mic on mute? Yes, Pankti, bolu. ma'am, I can't able to understand chapter 4 question 5. Read out the question for me. आई ऑलरेडी रोड डेट आप लोगों के पास फोटोग्राफ पहुंच जाएगा जैसा हर टेस्ट के पहले हर एग्जाम के पहले आता है डोंट वरी टू मच अबाउट यस पंक्ति आई एम आस्किंग यू टू रीड आउट द क्वेश्चन फॉर मी व्हाट्स द प्रॉब्लम आई विल एक्सप्लेन इट अगेन पंक्ति if you have asked the questions I will need the answer also beta Ma'am, Ma'am, there your are voice is I can't able to hear you. ma'am. just give me 1 minute my dear it's what for problem everybody else please keep your mic on mute अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो चैट बॉक्स में लिखो नहीं तो अपना माइक म्यूट पे रखो मैम सिर्फ 4 क्वेश्चन ही है Okay. So Pankti, I think we have solved your problem already. Yes, ma'am, sir. Chapter 5th, Geography.
टाइम टेबल मिल जाएगा लोकेश, यू विल गेट टाइम टेबल वेरी सून, इट इज इन वर्क्स, एक दो दिन में टाइम टेबल आ जाएगा. यस साराक्षी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? कैन यू अनम्यूट योर माइक एंड आस्क? साराक्षी. Ma'am, हाँ बोलो बोलो. and I want to answer the first question. What is precipitation? Precipitation. ओके यस साराक्षी, आई विल गेट बैक टू यू बट द चैप्टर इज नॉट फिनिश्ड येट. अभी हमारा टाइड्स बाकी है. टाइड्स हम एक बार पढ़ लेते हैं. थोड़ा सा सुनामी का पोर्शन बाकी है. उसके बाद व्हेन वी विल मूव टू क्वेश्चन आंसर आई विल रिमेंबर दैट यू वॉलंटियर्ड फॉर दिस. Okay, ma'am. एग्जाम होने वाली है सार्थक, उसकी बात चल रही है. और आप लोगों की कॉपीज आई होप कंप्लीटेड है एंड वेरी सून वी विल ट्रेन यू कि आप कैसे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजें. इफ यू ऑलरेडी नो इट्स वेरी वेल, कोई दिक्कत नहीं है. और नहीं तो फिर आप लोगों के लिए मैंने एक डेट डिसाइड करी है. द डेट विल बी 20, लेट मी थिंक, योर क्लास 7 24 को आप लोग जो है आपका एक डेडलाइन है. 24 के पहले आप लोग अपनी कॉपीज कंप्लीट करके उसको मेरे ईमेल पर एज अ पीडीएफ फॉर्म भेजेंगे. अगर आपको पीडीएफ भेजना नहीं आता है तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, एक बार मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों से पीडीएफ मांग लूंगी. ज्योग्राफी क्योंकि जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद भेजना, थोड़ा सा पेशेंस रखो. बस खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो. अगर कुछ कॉपी में काम आपका इनकम्प्लीट रह गया है तो उसे करके रख लीजिए. मैं आपको बता दूंगी कि कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है. बस आप काम करके रख लीजिए क्योंकि 24 को मैं आपसे वो मांगूंगी. ऑलराइट, I hope that is all clear to everyone. I'll just write it in the chat box as well. So let's move ahead. हम थोड़ा सा टाइड्स को एक बार देख लेते हैं. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's Welcome to Moo Moo Math and Science. In this video, I'd like to talk about what causes tides. Tides are the rise and fall of sea levels caused by three items: gravitational force of the moon, the sun, and the rotation of the earth. Gravity is the force that pulls everything in the universe towards everything else. Even though the moon is much smaller than the sun, the moon's pull has a much more pronounced effect on the Earth's ocean because it is closer than the sun. The moon exerts around 2.5 times more force than the sun. On the side of the Earth that's facing the moon, the pull of gravity causes oceans to bulge outward. On the other side of the Earth, the moon's pull on the solid ground causes the oceans to bulge there. The Earth rotates on its axis, so this bulge is constantly changing location. The moon thus tends to stretch the Earth slightly along the line connecting the Earth and the moon. The solid Earth deforms a bit, but the ocean water, being fluid, is free to move much more in response to the tidal force. Where the bulge is bigger, it's high tide. Where the water doesn't bulge, it's low tide. In this picture, you can see the difference between high and low tide. The moon's orbit around the Earth also causes tidal changes. Most places get 2 high tides and 2 low tides each day. Approximately twice a month, around new moon and full moon, when the sun, moon, and Earth form a line, the tidal force due to this alignment is at its maximum, and the tide's range is also at its maximum. This is called spring tide. When the moon is at first quarter or third quarter, the sun and moon are separated by 90 degrees, and the solar tidal force cancels the moon's tidal force. At these points in the lunar cycle, the tide's range is at its minimum. This is called neap tides. So there we go, a bit of information about tides and why we have them.
The video itself was very clear and very self-explanatory. I'll just send the link in the chat box also so that you can view it in your own time. बेटा आपको आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपके यहाँ नेटवर्क वीक है. आप कितनी ही बार मुझसे बोल लेंगे क्योंकि जब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो मैं यहाँ से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकती हूँ. टाइड्स डू नॉट कॉज डिस्ट्रक्शन, सुनामीज डू. क्योंकि टाइड्स जो है वो एंटिसिपेटेड होते हैं. आप हमने क्या देखा कि टाइड की एक साइकिल है. दिन में 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड आते हैं. तो लोगों को जो कोस्टल रीजन में रहते हैं दे ऑलरेडी नो दैट आज ये वाला टाइड आने वाला है, आज इस तरीके का टाइड आने वाला है. हम लोगों ने पिक्चर्स देखी कि जब लहरें बहुत ज़्यादा कोस्ट से दूर की तरफ होती हैं और जब बहुत ज़्यादा पास में होती हैं. आप कभी भी देखेंगे किसी का भी घर जो होता है वो बिल्कुल ओशन से लगा हुआ नहीं होता है. Yogita, I am repeating again. तो आई होप टाइड्स को लेके आप लोगों को इतना कुछ खास खास कंफ्यूजन नहीं होगा. हम एक बार अगर बुक में भी देख लेते हैं कुछ खास है नहीं इसमें. बस ये हमें 2 तरीके के टाइड हैं उनके बारे में पता होना चाहिए एंड व्हाट कॉजेज दोज टाइड्स. और एक मेरे पास अच्छा वीडियो और है आप लोगों के लिए विच वाज अबाउट सुनामी. Yes, you're absolutely correct. In 479 BC, when Persian soldiers besieged the Greek city of Potidaea, the tide retreated much farther than usual, leaving a convenient invasion route. But this wasn't a stroke of luck. Before they had crossed halfway, the water returned in a wave higher than anyone had ever seen, drowning the attackers. The Potidaeans believed they had been saved by the wrath of Poseidon, but what really saved them was likely the same phenomenon that has destroyed countless others, a tsunami. Although tsunamis are commonly known as tidal waves, they're actually unrelated to the tidal activity caused by the gravitational forces of the sun and moon. In many ways, tsunamis are just larger versions of regular waves. They have a trough and a crest, and consist not of moving water, but the movement of energy through water. The difference is in where this energy comes from. For normal ocean waves, it comes from wind. Because this only affects the surface, the waves are limited in size and speed. But tsunamis are caused by energy originating underwater, from a volcanic eruption, a submarine landslide, or most commonly, an earthquake on the ocean floor, caused when the tectonic plates of the Earth's surface slip, releasing a massive amount of energy into the water. This energy travels up to the surface, displacing water and raising it above the normal sea level. But gravity pulls it back down, which makes the energy ripple outwards horizontally. Thus, the tsunami is born, moving at over 500 miles per hour. When it's far from shore, a tsunami can be barely detectable, since it moves through the entire depth of the water. But when it reaches shallow water, something called wave shoaling occurs. Because there is less water to move through, this still massive amount of energy is compressed. The wave's speed slows down while its height rises to as much as 100 feet. The word tsunami, Japanese for harbor wave, comes from the fact that it only seems to appear near the coast.
If the trough of a tsunami reaches shore first, the water will withdraw farther than normal before the wave hits, which can be misleadingly dangerous. A tsunami will not only drown people near the coast, but level buildings and trees for a mile inland or more, especially in low-lying areas. As if that weren't enough, the water then retreats, dragging with it the newly created debris and anything or anyone unfortunate enough to be caught in its path. The 2004 Indian Ocean tsunami was one of the deadliest natural disasters in history, killing over 200,000 people throughout South Asia. So how can we protect ourselves against this destructive force of nature? People in some areas have attempted to stop tsunamis with seawalls, floodgates, and channels to divert the water. But these are not always effective. In 2011, a tsunami surpassed the flood wall protecting Japan's Fukushima power plant, causing a nuclear disaster in addition to claiming over 18,000 lives. Many scientists and policymakers are instead focusing on early detection, monitoring underwater pressure and seismic activity, and establishing global communication networks for quickly distributing alerts. When nature is too powerful to stop, the safest course is to get out of its way. Yes. अगर आपको अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर में कुछ सारी चीज़ें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए. Yes, you can rejoin Yurika. I'll send the link to you as well. You can watch it in your own time. Is there anything left in this chapter that you did not understand? बेटा अगर कुछ रह गया है तो पूछो. वाटर साइकिल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. इट वाज द इजीएस्ट थिंग. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज है तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि दो तरीके का पानी होता है. एक होता है सलीन वाटर, एक होता है फ्रेश वाटर. सलीन वाटर में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. उसका परसेंटेज आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं. मोस्टली जो ओशन वाटर होता है दैट इज सलीन इन नेचर. इट हैज़ अ लॉट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट. फ्रेश वाटर वो वाटर है जो हम इजीली ड्रिंक कर सकते हैं, जैसे कि जो लेक्स में होता है, जो रिवर्स में होता है. So do we have any question or should we start with the question answers of this chapter? Because from my side the chapter is completed. Anyone? Yes, it's okay. It's okay. I'm not crucifying you for rejoining the class. It's completely understand. You were not able to understand tide. I'll just try it in short again. Tide is basically Earth. You cannot understand tides. Okay. Earth, अर्थ, मून एंड सन. अगर ये तीनों चीजें एक लाइन में है तो वो एक साथ ग्रेविटी को पुल करेंगी. ग्रेविटी क्या होती है? सब सारी एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटीज में ग्रेविटी है. ग्रेविटी से वो पुल करे क्योंकि अर्थ सॉलिड है तो अर्थ मूव नहीं कर पाती है, बट द वाटर इज फ्लूइड. तो वाटर ग्रेविटी के पुल से खिंच जाता है, इधर से उधर चला जाता है. तो जब ये तीनों एक लाइन में होते हैं तो काउंटर एक्ट करते हैं. काउंटर एक्ट कैसे करते हैं कि दोनों तरफ से जो है ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है और उसकी वजह से स्प्रिंग टाइड आते हैं. मीट टाइड कब आते हैं? जब सन यहाँ है, मून यहाँ है और बीच में अर्थ है. एक ऐसा अगर एंगल बन जाता है तो ये एक दूसरे के फोर्स को कट करते हैं, अलग तरीके से फोर्स लगता है. तो जो टाइड होते हैं वो उतने हाई नहीं होते हैं. हमने दो तरीके के अलग फिनोमेना पढ़ने थे इसके अंदर. एक तो ये कि जब सन और मून के जो पोजीशन है वो चेंज होती है, उसकी वजह से स्प्रिंग टाइड और मीट टाइड आते हैं. एक तो ये फिनोमेना हुआ. दूसरा फिनोमेना ये है कि पूरे दिन जब अर्थ रोटेशन लेती है, जो अर्थ का और वाटर का जो इंटरेक्शन है सन और मून के साथ, उसकी वजह से दिन में दो बार हाई टाइड आते हैं जब टाइड जो है बहुत ज्यादा हाई होते हैं. देखो अगर यहाँ से ग्रेविटी पुल कर रही है तो यहाँ से कुछ खिंच रहा है, ऐसे पुल होता है. अगर यहाँ से कुछ खिंच रहा है तो यहाँ पर लो टाइड आएगा, यहाँ पर हाई टाइड आएगा. अगर ये अर्थ
आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर, आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू। यहाँ से कुछ खिंच रहा है तो यहाँ से जा रहा है, यहाँ लो टाइड है, यहाँ हाई टाइड है। फिर जब अर्थ रोटेशन लेगी तो यहाँ पर हाई टाइड है, यहाँ पर लो टाइड है। फिर जब अर्थ रोटेशन लेगी, यहाँ हाई टाइड है, यहाँ लो टाइड है। तो अर्थ में हर पोजीशन पे जहाँ पर ओशन है, दिन में 2 बार हाई टाइड आता है, दिन में 2 बार लो टाइड आता है। इज इट क्लियरर? एक बार मैं आप लोगों को बुक के थ्रू भी बता देती हूँ। ये है हमारे काम का डायग्राम। दिस इज नीप टाइड। नीप टाइड कब आ रहा है? जब सन और मून अर्थ से राइट डिग्री एंगल पर है। यहाँ से मून पुल कर रहा है, यहाँ से सन पुल कर रहा है। तो देखो टाइड कैसे जा रहे हैं, इस तरीके से अंडे की तरह। अगर अंडा ऐसे रखा हुआ है तो, और अगर अंडे को आपने लेटा दिया तो आप उसे कंपेयर कर सकते हो स्प्रिंग टाइड से, क्योंकि ये दोनों उसको पुल कर रहे हैं। जब हाई टाइड्स होते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है शोर के। जब पानी शोर के क्लोज आ जाता है, जो फिशेस होती हैं वो भी शोर के पास आ जाती हैं। जब शोर के पास फिशेस आ जाती हैं तो उन्हें कैच करना इजी होता है। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर प्रॉब्लम? सो आई होप वी आर क्लियर हियर। तो हम लोग थोड़े से क्वेश्चन आंसर शुरू कर देते हैं। आई विल स्टार्ट विद सानिका बिकॉज शी ऑलरेडी वॉलंटियर। Yes, Tanika, let's begin. Question answer time. What is precipitation? Is Tanika present in the class? Yes, I'll do that. Yes. Is my voice clear now? Can you hear me? So I was saying that we have to do question one. But Sanika already volunteered. I'll give her the chance first, and if she is not ready, then we can ask other people to do that. Sanika, are you in the class? Okay, fine. Catherine, you may proceed. Question number one. Yes, ma'am. What is precipitation? The falling of water from cloud is called as precipitation. Okay, fine. बेटा अगर आप पेज नंबर बता दोगे, it will be easier for all of us. मैम वो पेज नंबर में सही से लिखा नहीं था, इसलिए मैंने छोटा सा लिखा था। Okay, fine. But then again, anybody else with page number? See, precipitation is basically the falling of any kind of. Let me find the page number for you.
Yes, sir. Catherine, can you please read the answer? Can you please read your answer again? I think your answer is better. It's shorter and simple, Yes, ma'am. so that everybody can hear it. The falling of water from cloud is called as precipitation. बेटा फाउलिंग ऑफ ड्रॉपलेट नहीं लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे द फॉर्म ऑफ. लेट मी जस्ट फाइंड द बेटर आंसर फॉर यू. Just give me 1 minute. Yes. I'll write it in the chat box. Precipitation is the water released from clouds in the form of rain, freezing rain, sleet, snow और hail. इसमें से आप चाहो तो freezing rain हटा सकते हो, but precipitation basically केवल rain नहीं है. Every other kind of thing that falls over from the sky can be termed as precipitation. Yes, Arush, you may proceed. Question number 2. Question number two, what is water cycle? Page number 30, third paragraph. The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. Yes, I think you can see it here. The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere, and land is known as water cycle. Good. Next question, who would like to answer? Yes, Sarakshi, you may answer. Question number 3. What are the factors affecting the height of the waves? Page number 34. Page number 34, okay. An earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslides can shift large amounts of ocean water. As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meter. Yeah, I think the answer is incorrect. It's not completely correct. What are the factors affecting the heights of wave? Anybody else? Anybody else wants to answer? Yes, Anumika, batao. Ma'am, the answer is factors affecting the height of the waves are underwater volcanic eruptions, underwater earthquakes, and underwater landslides. Okay, ठीक है. I'll accept that. And the next question is, let me see. Yes, Sanika, you may answer next answer. Sanika, Yes, ma'am. batao. What are tides and how they are caused? Mm-hmm. Answer. Page number 35. Okay, bolo. The thematic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide. It is, हाँ ठीक है. और it is caused by. It is caused by the strong the strong governmental pull extended by the sun and the moon on the earth surface cause the tides. The strong gravitational pull. Okay, Sorry. good. Let's see next question. Let me see. Ma'am, may I? एक Ma'am, मिनट may I? Aditya? देखो एक साथ मत चिल्लाओ. Let me see who has not answered. I'll pick someone. Just give me 1 minute. Okay, fine. व्योम बताओ. What are ocean currents? Page number 36, last paragraph. Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite directions. The ocean currents may be warm or cold. Okay. Next. What is the next question? एक सुनो, बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ लीजिए. व्हाट आर वार्म करेंट्स, व्हाट आर कोल्ड करेंट्स. इसके आगे ही उसका आंसर है दैट वार्म करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स पोल. Answer for what is warm current. The cold currents carry water from polar or higher latitude to tropical or lower latitudes. That's all.
ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। और लेट्स मूव अहेड नेक्स्ट। लेट मी सी हु वाज लेफ्ट ओवर हियर। Yes, Amay. We have not completed question 4. Just give me 1 second, Amega. Let me see what did we leave. I'm navigating towards. Okay, let me see what was the question number 4. What factors affect the movement of ocean water? We did this or we did not do it. What factors affect the. Okay, Anumega, you may tell the answer. Yes, ma'am. If you have It something. is in page number 33. Um, Factors affecting the movement of ocean water are waves, tides, and currents. No, 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 no. These are not factors. These are the movements of ocean water. हम लोगों ने अभी एक वीडियो देखा था, उसमें हम ये कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आर wind, solar energy, wind, gravitation of sun and gravitation of moon and the rotation of earth. बेटा 3 का आंसर तो हो चुका है ना, तो हम वापस ऊपर नीचे क्यों जा रहे हैं? इफ यू हैव समथिंग टू ऐड इट्स ओके। Okay, what are tides and how they are caused? Yes, we have done this. I will need answers for give reasons. Ocean water is salty. Amay, you may answer this one. Ocean water is salty. Answer: the water of the ocean is salty because it contains large amount of dissolved salt. Very good. Next, I will give to Aditya. The quality of water is deteriorating. Aditya? Aditya is, have Aditya left the class? Are you here, Aditya? Laksh, you may answer. Batao. Laksh, मैम एग्जाम्स कब होंगे? बेटा टाइम टेबल मिल जाएगा तुम्हें। Okay, the time is almost up, so let's leave this question, the give reason second question, and यहाँ पर ये जो टिक द करेक्ट आंसर है मैच द फॉलोइंग है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड ये करके देखना फॉर फन, इसको भी हम लोग क्लास में करके देखेंगे, ये फॉर फन वाला सेक्शन, ये तुम्हारा होमवर्क है। Okay, so that will be all for today's class and good, good. If you have done this, it's all right. Okay, Lakshya, just try to take care of that problem as soon as possible if you can. And so that will be all for today's class. Thank you and sign off. You may start. Sarah ma'am. Sign off. Sarah ma'am. Sign off. Sarah ma'am. Sarah ma'am. Saira ma'am. Sarah ma'am.